Good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and in this session, it's a completely new session. Okay. In the previous sessions, we have talked about the stock markets in very detail. We are talking about everything about the stock markets, starting from the primary market to capital market to secondary market to money market. We also talked about the fundamental analysis. We talked about the different kinds of ratios, the valuation models, scientific indicators, technical analysis. A large number of things we have discussed, but but we discussed these things only about the stock market. Okay. We also talked about the stock market terms and terminologies that you people should know. So all these things, or all the previous sessions that we had in the past, all these sessions were dedicated towards a complete understanding of the stock market only. Multiple sessions, I guess more than 60 to 65 sessions have been done on stock market in general, and from like basic to advanced. But this session gonna be a two different session for you, and here we're gonna talk about the forex market. What is a forex market? Is your foreign exchange market. Foreign exchange means the currencies are traded here, or global currencies are traded here. What happens in a stock market? In a stock market, your shares are being traded, equity shares are traded. But what happens in a forex market? Your currencies are traded. Like basically your rupee is traded, dollar is traded, your like European currencies, your British pound, Japanese yen, your like Swedish krona, your Swiss franc, right? All these currencies are traded, and like multiple other currencies. Okay. So when instead of shares, the currencies are being traded in the market. Okay. When instead of shares, the currencies are being traded in the market, that is your forex market. Okay. So one thing that you need to know, in the stock market, your stocks or shares are being traded, the equity shares. But in the forex market, your currencies are being traded. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पे करेंसीज ट्रेड होती हैं. ठीक है. अब करेंसीज को क्यों ट्रेड करना चाहिए वो हम बात करते हैं. बट द वन थिंग दैट यू पीपल शुड नो, ओके, योर फॉरेक्स मार्केट is the largest market. Okay, it is the largest market overall. Like when we talk about your forex market. Okay. See, when we talk about basically the market capitalization, अगर हम stock market की बात करें, ठीक है, I'll tell you the exact number. When we talk about only the stock market, your stock market का size, अगर मैं मतलब कि वर्ल्ड का बोलूं, your वर्ल्ड का size, it would be around 93.7 trillion, मतलब कि ट्रिलियंस में है. And 1 trillion is equal to 100 lakh crores, मतलब 93.7 100 lakh crores. ठीक है, सुनने में बहुत ज्यादा रहेगा. ठीक है. बट अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेक्स मार्केट, इट्स 1.93 क्वाड्रिलियन. क्वाड्रिलियन मतलब इट इज डबल ऑफ अ ट्रिलियन. एक क्वाड्रिलियन में कितने होते हैं ट्रिलियन? 100 करोड़ ट्रिलियन. 100 ट्रिलियन. ओके, दैट यू शुड नो. सी, आई टेल यू. When you talk about a quadrillion, in quadrillion you have like 1000 trillions, like not even 100 trillions, 1000 trillions. तो सोचो, तुम्हारी 1.93 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट है, इससे 1000 गुना ज्यादा, मतलब 1000 ट्रिलियन में एक क्वाड्रिलियन बनता. यू हैव मिलियन, देन बिलियन, देन ट्रिलियन एंड देन क्वाड्रिलियन. ओके, क्वाड्रिलियन में तुम्हारी फॉरेक्स मार्केट है. एंड लोगों को लगता है कि फॉरेक्स मार्केट तो छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे तुम्हारा लाइक करेंसीज ट्रेड होती हैं एंड कुछ नहीं होता. स्टॉक मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट. योर फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट देन एनीथिंग. Your forex market top पे है, then you have a stock market, and after that you have your like commodities market. Stock market and forex market में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, in terms of size and market capitalization. One thing that you know, this foreign market is OTC. It is over the counter. मतलब on exchange trade नहीं होती. It is over the counter. The forex market. So why is like forex market so essential?
तो फॉरेक्स मार्केट क्या है, देखो अगर मान लो वह ट्रेडिंग कोई चल रही है या कोई भी मतलब कि ट्रांजैक्शन चल रही है एंड उसमें लाइक डॉलर्स एंड रुपीज इन्वॉल्व, ठीक है, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन in which your dollars and rupees are involved, ठीक है. So what happens if you have to receive, पहले हम लेके चलते हैं, just assume that $1 is equal to like 75 rupees, okay. I have provided my services to someone outside India in US, ठीक है, किसी को मैंने यूएस में अपनी सर्विसेज दी, तो ऑब्वियसली आई वुड बी अर्निंग इन डॉलर्स, राइट. So just assume like for the sake of simplicity amount of $1 is due from that person. यूएस में बंदा है, उसको मुझे उसे मुझको दैट पर्सन हैज टू पे मी $1, दैट इज ही हैज टू पे मी 75 rupees, okay. How can this exchange rate, because exchange rate changes continuously, if your $1 is 75 right now, your $1 might be like 74 or 76 or 75.5, second change होता है. So how can it benefit me or how can it turn into losses, ठीक है. मुझे मतलब कि 75 रुपीज उससे लेने हैं. अब अगर थोड़े दिन बाद डॉलर की वैल्यू अगर 76 होगी, मतलब $1 इज इक्वल टू लाइक 76 रुपीज एंड मुझको $1 लेना है उससे, आई वुड बी गेटिंग 76 रुपीज. If I want to have money, if someone is my debtor in US and that currency is far more appreciable or that currency has a higher value than my home India's currency, मैं बोलूंगा, भगवान से दुआ करूंगा द करेंसी राइजेस, उनकी करेंसी बढ़े एंड मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो, नीचे गिरे, बिकॉज उनकी करेंसी जितना बढ़ेगी उतना आई वुड बी अर्निंग, ओके. 78 हो गया, 79 हो गया, I'll be getting instead of 75 now I'll be getting 76, then 77, then 78. बट अगर ये 74 पे चला गया, 73 पे चला गया, तो मुझको ₹1 का ₹2 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अर्लियर आई वॉज गेटिंग 75 रुपीज बट नाउ आई एम गेटिंग 74 और 73 रुपीज एंड $1 में ट्रांजैक्शन नहीं होती, $100 to $50 में होती है, तो ये अमाउंट भी थाउजेंड्स एंड लैक्स में आएगा, वह लैक्स एंड थाउजेंड्स का डिफरेंस हो जाएगा, ओके. Whereas if I have to pay someone, अगर मुझे किसी और को पे करना, तो आई वुड वांट, भगवान से दुआ करूंगा प्राइस कम से कम हो जाए, अपनी रुपी की वैल्यू बढ़ जाए एंड डॉलर की वैल्यू गिर जाए. इन दैट केस आई वुड होप फॉर द ऑपोजिट थिंग. मैं बोलूंगा 74 हो जाए, 73 हो जाए, जितनी कम हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू पे लेस, क्योंकि मुझे पे करना है. बट अगर वैल्यू बढ़ गई, इट वुड बी द राउंड टर्न ऑन मी, ठीक है, तो मुझे लाइक ज्यादा पे करना पड़ेगा. सो व्हेन आई हैव टू रिसीव पेमेंट, आई विल प्रे that the value of the US dollar rises and the value of my home currency India falls. But when I have to pay, I'll pray that the value of my currency rises and that currency falls. And it is not only true in India and US. हो सकता है कि US and dinar, ठीक है, because dinar is the costliest currency, ठीक है, तो वहां पे फिर मतलब कि US वाले करेंगे वो, ठीक है, अगर लाइक उनको पेमेंट देनी है, ठीक है, कि लाइक अपनी वैल्यू बढ़ जाए एंड दिनार गिर जाए. So it is not always in India and US dollar. It can be in India and European, US and European, Australian dollar and Canadian dollar. Okay, the currency which is powerful or the currency which is like not powerful as compared to the powerful currency. So the traders between the two countries को ये चीजें होती हैं, and that is why you need to have knowledge about forex. And that is why like when we particularly talk about the stock market, we talked about futures and all. Forex में भी होते हैं. We can fix an exchange rate, but that is fixed and that is over the counter, ठीक है. तुम कर सकते हो, मान लो कि अगर $1 पे लाइक 75 तुमने फिक्स कर दिया कि चाहे यूएस की वैल्यू बढ़े या कम हो, I'll be receiving in $75 like in 75 rupees only. अगर वो 74 हो गया, मैं प्रॉफिट. अगर 76 हो गया तो I'll hope यार मैंने मतलब कि अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों पाया. सिमिलरली अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो अगर 74 हो गया, आई विल बी लाइक क्यों यार, मैं ज़्यादा पे कर देता, मतलब ज़्यादा हो जाता. अगर 76 हो गया तो आई विल बी हैप्पी कि मुझे अब ₹1 लाइक कम पे करना पड़ेगा. Okay, so these kinds of contracts can also be entered into.
ठीक है. So this was one thing, like when we talk about the forex market. And forex market, it gives you the advantage of leverage. अगर तुम्हारे पास 1 रुपए है तो तुम 5,000 की करेंसीज खरीद सकते हो. And the amount of leverage that is provided in the forex market is times more than as compared to in stock market. ठीक है. फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज बहुत ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट. सो दैट इज वन बेनिफिट दैट यू कैन हैव. ठीक है. क्या. So these things must be like clear to you when you talk about the forex market. अब अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलर, इंडिया में करेंसीज ट्रेड होती हैं बट सारी नहीं होती. जस्ट अ फ्यू करेंसीज आर ट्रेडेड. वन इज योर यूएस डॉलर्स, द सेकेंड इज योर यूरोपियन करेंसी, other one is like what we write it as this, your pounds. Now लिख देता हूँ. It is your, what has bolded up, British pound. And the third one is your Japanese yen. We call it as JPY. European bond को we write it as Great British Pound. European को we write as EUR, and US dollar को तो we write as USD. Okay, so these four currencies are traded. So in total, we can say that 5 currencies are traded: US dollar, European currency, the British pound, Japanese yen, and Indian currency. All these 5 currencies are traded in India, and इन्हीं पर like सब contracts होते हैं. तो like if you are ordering something from Australia and ये सब, ठीक है, तो वो सब हैं contracts. But जो trade होते हैं, trading तुम्हारी like इनमें ही होती है. Contracts can be settled into that case also. Like if someone is ordering something from Pakistan or Australia or New Zealand, it is possible, but उनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे द रिस्क इज, लोगों को लॉस भी बहुत होता है. अगर लॉस इज मोर देन द स्टॉक मार्केट. जैसे कि मान लो कि फ्यूचर्स ऑप्शन में मान लो कि जो लॉसेज होते हैं, उस तरीके के लॉसेज लोगों को यहाँ पे होते हैं. गेन भी हो सकता है बहुत, बट इट इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशन. ठीक है. So that was the basics of forex market. In the next session, I'll be talking about some more deep concepts of like